Hello everyone, we are starting with periodic classification of elements. This is from chapter 5. So let's start with first question of it. So it says the elements of the second period of the periodic table are given below. Lithium is there, beryllium is there, boron is there, carbon is there, nitrogen, oxygen and fluorine is there. So they are saying give reason to explain why atomic radii decrease from lithium to fluorine. So we know that lithium atomic number is 3. So the electronic configuration of it will be 2,1. So first आपके शेल में क्या हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेकंड शेल में कितने हो गए 1 इलेक्ट्रॉन हो गया अब let's move to beryllium now. Beryllium has 4, so 4 can be written as 2 comma 2. And now what you can do is you can make two shells and just make 2 electrons in the first one and 2 in the next one. So what we can see is that there is increase in atomic number. As we are going from left to right, there is increase in atomic number. So there will be some force of attraction between nucleus and the valence electron. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जाएंगे तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा. देयरफॉर वी से कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है हमारा वो इंक्रीज करता है. And what will happen with respect to this? Atomic radii will decrease as we go from left to right. So yes, this is the answer for the first one. Second में लिखा है identify the most metallic one. Out of these all, most metallic कौन सा होगा? It will be lithium because it can lose electron easily due to large atomic size. So yes, the most metallic one will be lithium. Second, they are saying non-metallic one, it will be the fluorine one. Why? Because it can gain electron very easily due to very smallest atomic size. So yes, that's the answer for question number 1. Now let's move to the second one. Let's start with second question. It says the elements of the third period of the periodic table are given below. Which atom is bigger, sodium or magnesium? Why? So we know that sodium is greater than magnesium. Why? Because it has lesser nuclear charge. और न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होता है तो इसका मतलब क्या होता है उसका साइज भी बिग है. सो यस सोडियम इज बिगर दैन मैग्नीशियम राइट. सेकंड में आपसे पूछा आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक इन पीरियड 3. तो इसमें से तो साफ साफ पता है हमें कि जो मेटल है वो आपका कौन है सोडियम है और जो नॉन मेटल है वो कौन है क्लोरीन है. और रीजन अगर आपको देना है तो रीजन तो यही जाएगा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था दैट सोडियम इज मोस्ट मेटालिक एज इट कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन. Why? Because of larger atomic size. And chlorine one can gain electrons very easily due to smallest atomic size. So yes, that's the answer for the second one. Now moving to the third one. Let's start with question number 3. It says the position of three elements A, B and C in the periodic table is shown below. Element A is a non-metal. So give reason they are saying कि क्यों element A जो है वो non-metal है. Because हमें पता है कि group 17 में कौन सा element होता है. It has 7 valence electrons in it. तो वो क्या कर सकता है गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन. और अगर गेन हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या हुआ इट इज अ नॉन मेटल. सिमिलरली सेकंड में आपसे पूछा गया एलिमेंट बी हैज लार्जर एटॉमिक साइज देन एलिमेंट सी. तो अगर हम स्टेजेस देखें दोनों की तो ग्रुप 16 है इसका. सी का क्या है ग्रुप 17 है. तो बी का क्या होगा लेसर एटॉमिक नंबर होगा ऑब्वियसली क्योंकि 16 में है वो. और अगर एटॉमिक नंबर कम है उसका तो इट विल हैव लेस न्यूक्लियर चार्ज. और लेस न्यूक्लियर चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा. सो देयरफॉर दे हैज लार्जर एटॉमिक साइज. और सी में उन्होंने पूछा सी हैज अ वैलेंसी ऑफ 1 ऑब्वियसली क्योंकि सी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7 और 8 में से 7 माइनस करोगे तो यू विल गेट 1. तो अगर इसको गेन करना है 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए सो यस इट्स वैलेंसी इज 1. So yeah, that's the answer for the third one. Now moving to fourth part. Let's start with question number 4. It says what is meant by periodicity in properties of elements with reference to the periodic table. So basically periodicity का मतलब होता है repetition होना same properties का after definite interval. जैसे periodic motion होता है वैसे ही periodicity होता है कि एक ही चीज़ का repeat होना after some interval. और yes, this is the answer for A part. सेकेंड देखते हैं why do all the elements of same group have similar properties. क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो exactly same होते हैं इसी वजह से दे पोजेस सिमिलर प्रॉपर्टीज. थर्ड वाले में उन्होंने पूछा हाउ विल द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड. जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखे फर्स्ट और सेकंड उसमें भी सेम था
कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, इंक्रीज होनी जाती है, हो जाती है. वाई इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. और अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा. So yes, that's the answer for the fourth one. Let's start with question number 5. It says what are groups and periods in the periodic table? तो ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम, और जो पीरियड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज. और बी पार्ट में आपको फिर क्या पूछा गया, टू एलिमेंट्स एम एंड एन बिलोंग टू ग्रुप 1 and 2 respectively are in the same period of the periodic table. How do the following properties of m and n vary? तो m and n का सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है, सेम पीरियड है, ग्रुप 1 और 2 है, और साइज कैसा होगा दोनों का, तो ऑब्वियसली n विल बी स्मॉलर देन m, because atomic size क्या होता है, it decreases from left to right, so that's why n is smaller than m. नेक्स्ट देखते हैं देयर मेटालिक करेक्टर. तो मेटालिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, इट विल बी ऑफ m. m is more metallic than n. m का क्यों होगा ज़्यादा, क्योंकि देखो m फर्स्ट ग्रुप में, और फर्स्ट ग्रुप में मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होगा बिकॉज इट डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. So yes, m is more metallic than n. Their valencies in forming oxides. तो ऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होगी, वैलेंसी 1 और 2 की क्या होगी, सबसे पहले m की क्या होगी वैलेंसी, ग्रुप 1 है तो 1, n की होगी 2. सो वैलेंसी गोes on increases as first and then decreases. So yes, they will form oxides with respect to 1 and 2. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड. तो m किसके साथ है, Cl के साथ है, m की वैलेंसी भी 1 है, Cl की भी वैलेंसी 1 है, तो m1Cl बन जाएगा, और यू कैन राइट MCl ओनली. और n के साथ क्लोरीन, n की क्या होगी 2, क्लोरीन 1, सो N1Cl2, और यू कैन राइट NCl2. So yes, these are the molecular formulas of chloride. Let's now move to the next one. Question number 6 says the atomic numbers of three elements x, y, z are 9, 11 and 17 respectively. Which two of these elements will show similar chemical properties y? तो x की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपकी 9, 2, 7. y की कॉन्फ़िगरेशन will be 2, 8, 1. z की कॉन्फ़िगरेशन it will be 2, 8, 7. नाउ यू कैन सी कि दो ऐसे हमारे एटॉमिक नंबर्स हैं जिसके एंडिंग किससे हो रही है 7 से. सो इफ दे आर एंडिंग विद सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स दे विल पोजेस same chemical properties. X and Z will possess same chemical properties. So yes, this is the answer for sixth one. Two elements X and Y belong to group 1 and 2 respectively in the same period of periodic table. Compare them with respect to periodic table from left to right and Y. So हमारे पास x और y क्या दिया हुआ है, ग्रुप 1 में है x and y is in group 2 and they are saying कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे आप इसे कंपेयर करो. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके 1 होगा और इसका 2 होगा, डिपेंड्स ऑन द ग्रुप. सो यस, दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट वन. सेकेंड में देयर वैलेंसीज, वैलेंसी ऑफ फर्स्ट वन विल बी 1 ओनली and valency of second one will be 2 only. Metallic character, so yes, x is more metallic than y क्योंकि लेफ्ट से राइट तक होता है ना हमारा, लेफ्ट में मेटालिक नेचर बहुत ज़्यादा होता है. नेक्स्ट में साइज ऑफ देयर एटम, सो यस x is greater than y because x belongs to group 1. Then it is given formula of their oxides. Okay, x with oxygen, so valence कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है it is 2, so X2O. अब y के रिस्पेक्ट में अगर y की वैलेंसी देखें तो इट इज 1 ओनली, नहीं सॉरी 2 इट इज, एंड ऑक्सीजन की भी 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल होके 1, सो YO एंड फॉर दिस वन X2O. नेक्स्ट में आपको देखा फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड्स. ओके, सो वी नो कि x के साथ क्लोराइड कैसे बनेगा, इट विल बी 1 ओनली, और क्लोरीन का क्या होता है इट इज 1, सो HCl. और y के साथ क्लोरीन का क्या बनेगा, y has 1, chlorine has 1, sorry y has 2, chlorine has 1, so it will be YCl2. So yes, this is the answer for the seventh one. Let's start with question number 8. It says atomic number of an element is 16. Predict the number of valence electron in its atom. Valence electron कितने होंगे हमारे, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा.
K shell will have 2, L shell will have 8, M shell will have 6. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6. वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारी, क्योंकि मोर देन 4 है, तो 8 minus 6 will give you 2. So 2 is the answer. Its group number. Group number कितना होगा 16, क्योंकि more than 4 है, तो just add 10 to it. So 16 is the group number. Whether it is a metal or non-metal. Obviously non-metal है, क्योंकि ये gain करेगा electron. So yes, it is a non-metal. Nature of oxide formed by it. ऑक्सीजन के साथ कैसा फॉर्मेशन होगा, तो हमारा जो मेटल है, जो सॉरी नॉन मेटल है, लेट्स से इट इज एन, एन नहीं एस है वैसे ही है, तो एस ही ले लेते हैं. एस नेचर ऑफ ऑक्साइड. ओके, नेचर ऑफ ऑक्साइड वैसे तो लिख देती हूँ फॉर्मूला भी. एस के साथ ऑक्सीजन, एस की वैलेंसी कितनी है 2, और ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, तो एस हो जाएगा. कैसा होगा ये एसिडिक. वाई, बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड. लास्ट वाले में आपका क्या फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड. क्लोराइड के साथ क्या होगा, क्लोराइड विल बी 1, S will be 2, so SCl2. So yes, this is the answer for 8th one. Now moving to the 9th one. Question number 9 says, why do all the elements of the same group have similar properties, same period have different properties? Similar properties इस वजह से होती हैं क्योंकि they have same number of valence electron. जैसे अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, तो ग्रुप 1 में सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, so they will possess similar properties. Whereas the other one, जैसे आपका पीरियड हो गया, उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. वाई, बिकॉज दे डिफर इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर हम पीरियड 1 की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा, वैलेंसी विल चेंज. सो यस, दैट्स व्हाई they will differ in number of they will differ in terms of their properties. So yes, that's the answer for the 9th one. Let's start with question number 10. It says sodium, magnesium and aluminium are the elements having 1, 2 and 3 valence electrons respectively. Which of these elements has the largest atomic radius? So sodium का जो होता है वो largest atomic radius होगा. Why? Because it will possess 11 electrons and 11 protons in it. So at least उसका क्या होना चाहिए, effective nuclear charge. So yes, sodium. Next में आपसे पूछा is least reactive. So aluminium is least reactive. Why? Because it has greater effective nuclear charge. क्योंकि सबसे ज़्यादा उसके पास क्या है, वैलेंसी है, और कह सकते हो कि एटॉमिक साइज उसका जो है वो स्मॉलेस्ट है, एटॉमिक नंबर उसका लार्जेस्ट है. So yes, it will be least reactive because it cannot lose electrons very easily. So yes, that's the answer for the B part, and we are done with this video. We'll start with the next chapter in the next video. Thank you for watching. Have a great day.